जी नाज़रीन, साईं खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं, असां ॻाल्हायूं पिया नबी साईं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कुटुंब बाबति, ऐं उन ॻाल्हि खे जितां कटे विया हुआसीं ब्रेक ते वेंदे उतां ई वरी ॿीहर जोड़ींदासीं। जी इहो दावत ज़ुल अशीरा जो वाक़ियो हुयो। इते जनाब अली अलैहिस्सलाम जी फज़ीलत खे बयानु कयो वियो ऐं जनाब अली अलैहिस्सलाम जी खिलाफ़त बिला फ़स्ल बयानु कई वई। उन खां पोइ क़ुरान मजीद खां पुछूं तो क़ुरान मजीद में सूरह मुबारक अहज़ाब जी आयत नंबर 33 नंबर आयत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, यानी जंहिं ख़ानदान सां काइनात जो रसूल मोहब्बत करे थो उन ई ख़ानदान खे अल्लाह जी ज़ात दुनियावी उखरवी रिजस ऐं नजासत खां परे करे छॾियो। इन्नमा युरीदुल्लाह, इन्नमा कलम हसर, बतहक़ीक़ अल्लाह जो इरादो फ़क़त ई फ़क़त इहो आहे। सही, कहिड़ो? युरीदुल्लाह लियुज़हिब, ताकि तव्हां खां परे करे, सही, अनकुमुर रिज्स, तव्हां खां रिजस खे परे करे। रिजस यानी गंदगी, उनखे चइबो आहे ॿिनि क़िस्मनि जी गंदगी थींदी आहे। हिकु थींदो आहे त बाबा गंदगीअ जे क़रीब वियासीं ऐं चुटको लॻो, सही, उनखे धोई साफ़ करणु, इहो आहे गंदगीअ जो दूर करणु। ठीकु, इहो थींदो आहे नज़ाफ़त। ठीकु, ऐं ॿी थींदी आहे नज़ाहत। ठीकु, नज़ाहत ईअं थींदी आहे जो गंद जो ढेर परियां पियो हुयो ऐं उनखे ॾिसी करे उन खां परियां ई रस्तो मटाए छॾियो। हाणे अल्लाह ताला जी ज़ात जेका अहले बैत रसूल जे लाइ जेको लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे, रिजस ईंदो आहे नज़ाहत जे लाइ, नज़ाफ़त जे लाइ न। नज़ाहत यानी अहले बैत खां रिजस नजासत खे परे करे छॾियो आहे। यानी अहले बैत नजासत जे क़रीब न आहिनि ऐं नजासत अहले बैतनि जे क़रीब कोन्हे। अहिड़े हिसाब सां यानी हिते नज़ाहत जो तरीक़ो आहे, नज़ाफ़त जो न आहे। नज़ाफ़त यानी सफ़ाई, गंदी शइ खे साफ़ करण खे चइबो आहे, लेकिन नज़ाहत यानी गंदगी ऐं अहले बैत जो ताल्लुक़ ई न आहे, अहिड़े हिसाब सां। उन खां पोइ ख़ुदावंद मुताल सूरह मुबारक शूरा में इरशाद फरमायो, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मशहूर मारूफ सूरह मुबारक शूरा जी आयत। हाणे इते तमाम अंबियाअनि में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमायो, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इन अजरी इल्ला अल्लाह, मुंहिंजो अजर फ़क़त अल्लाह ते आहे। यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खे अल्लाह चयो त तुंहिंजो त अजर मूं वटि आहे, तूं इन्हनि खां अजर न घुर। लेकिन हबीब किबरिया खे काइनात में वाहिद ज़ात ऐं वाहिद शख़्सियत आहे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जी, जंहिंखे अल्लाह ख़ुदि हुकुम कयो, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मुंहिंजा हबीब इन्हनि खे चओ त मां तव्हां खां अजर रिसालत नथो घुरां, फ़क़ति हिकिड़ी शइ जे, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगरि मूंखे अजर रिसालत ॾियणु चाहियो था त मुंहिंजे क़रीबनि सां मदद कयो, क़रीबनि सां मवद्दत कयो। क़रीब केरु हूंदो आहे? क़रीब पुट बि हूंदो आहे, क़रीब धीअ बि हूंदी आहे, वरी अहिड़े तरीक़े सां इन्हनि खां वधीक क़रीब, पुट ऐं धीअ खां वधीक क़रीब हिकिड़ी शइ थींदी आहे, उहा या पुट जी औलाद या धीअ जी औलाद, उहा वरी पुट खां बि वधीक क़रीब थींदी आहे। अगरि पुटु हुननि जो पीउ आहे ऐं आउं हुननि जो ॾाॾो आहियां त मुंहिंजो पुटु अगरि पंहिंजी औलाद खे थप हणंदो या थोरी तंज़ बि कंदो त पोइ मुंहिंजी हक़ लहींदी, बाबा न तूं न कर, छो? इन जे करे त मूंखे हू वधीक प्यारा आहिनि। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन। अहिड़े तरीक़े सां इमाम हसन मुज्तबा ऐं इमाम हुसैन शहीद करबला जनाब रिसालत मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ अहिड़ी हैसियत पिया रखनि, यानी हुया धीअ जा पुट, लेकिन उन्हनि खे पंहिंजो पुटु सॾणु, एतिरो प्यार ॾियणु जो केरु अगरि पंहिंजो सुवाल ॿियो करे त उनखे जवाबु ॾेई सघनि। काइनात जो रसूल आहे, कंहिंखे जवाबु न ॾींदो आहे, इहा ॻाल्हि न आहे। लेकिन हिकिड़ी मां मिसाल थो ॾियां, जीअं पंहिंजे पोटे ऐं ॾोहिटे खे केरु जवाबु नथो ॾेई सघे न, ईअं इमाम हसन मुज्तबा ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जेका ख़्वाहिश कंदा हुया, जनाब रिसालत मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॾहिं बि जवाबु न ॾिनो। छा आहे? फ़िअले रसूल सुन्नत ते दलालत कंदो आहे, यानी जेको कमु अल्लाह जो रसूल करे उहो सुन्नत आहे।
यानी अल्लाह जे रसूल ईद जे ॾींहुं या जुमे जे ॾींहुं या कहिड़ी बि नमाज़ में इहो ॿुधायो, अगरि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्ते रसूल ते अची वञे, भले 73 दफ़ा सुबहान अल्लाह जो तकरार थिए, सुबहान रब्बियल आला जो तकरार थिए, लेकिन जेसी ताईं इमाम हुसैन जी मर्ज़ी न आहे तेसी ताईं अल्लाह जो रसूल नथो थिए। छो? ही को आम रसूल आहे, ही उहो रसूल आहे जेको आम ज़िंदगी में पंहिंजे ज़बान खे बि हरकत अल्लाह जे मर्ज़ीअ खां सवा नथो ॾिए त इहो नमाज़ में पंहिंजो सर कीअं रखंदो अल्लाह जी इजाज़त खां सवा, या पंहिंजो सर कीअं खणंदो। यानी इमाम हुसैन पुश्ते रसूल ते वेठा रहिया ऐं रसूलुल्लाह 73 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला जो विर्द कयो। इन जो मतिलबु रसूलुल्लाह पंहिंजे मर्ज़ीअ सां न सुता रहिया, बिल्कुलु पंहिंजे मर्ज़ीअ सां सजदे में न रहिया, बल्कि अल्लाह जी मर्ज़ी इहा हुई त जीअं हुसैन जी मर्ज़ी जंहिंमहिल हुसैन लहे पोइ उथिजा, अहिड़े हिसाब सां। रिवायतूं चवनि थियूं हज़रत जिब्राइल अमीन अची विया हुया, उन्हनि चयो त सिजदो पंहिंजो डिघो करे छॾियो। जी 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 बिल्कुलु इन ॻाल्हि ते अचूं त सर आपको भी शामिल करेंगे इसी हवाले से कि नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में मोहब्बत बयान करते थे अपने ख़ानदान के हवाले से? जी जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू अभी अल्लामा साहब ने फरमाई है, और उसमें बस थोड़ा ऐड करना है कि ये हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानवादे के साथ जो सलूक व बर्ताव और मोहब्बत सब दिखाया है, वो दर हकीकत हमें बताया है कि हमें भी किस तरह से, जबकि जो काम हज़ूर सरवर कायनात करते हैं वो उनकी सुन्नत भी हो जाती है, और बहुत सारे मामलात वाजिब के मंजिल पर आ जाते हैं, ख़ास तौर पर कुरान में जहाँ आ जाए। आप फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। सही। अच्छा, जन्नत के अंदर जब लोग जाएंगे तो वो अपनी बेहतरीन शक्ल में, बेहतरीन सूरत में जाएंगे, वो जाएंगे ही जवान होकर। सही। यानी बूढ़ा तो कोई होगा ही नहीं वहाँ। तो अब जब वो सरदार हैं जवानों के, इसका मतलब ये है कि टोटल जन्नत के अहले जन्नत जो हैं उनके सरदार हैं। अब जो इनसे मुखालफत करेगा लाजमी कि वो अपने ख़ुद के लिए नुकसानदेह साबित होगा उसके। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बहुत सारे हदीस इस तरह बयान करते हैं, और बहुत सारे मामलात। अब ख़ास जो आज के दिन है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सखावत, हिल्म, बुर्दबारी, शुजात इंतहाई दर्जे पे थी। सही। यानी ज़्यादातर मशहूर तो उनकी सुलह जो नज़र आती है, लेकिन उनकी जंगें जहाँ हैं, जो मौला कायनात के साथ जब वो जंगों में साथ साथ गए हैं, तो वो एक अलग चैप्टर है पूरा, बिल्कुल उस पर बयान किया जाए तो वो बहुत तवील है। और इस हवाले से कि जो सुलह, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने हर दौर में, अब जब सखावत मिसाल के तौर पे मैंने कहा है, एक मर्तबा एक साइल आया, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद था, उसने अपनी ज़रूरत बयान की इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने। आपने कहा कि ठीक है, 5000 दिरहम और 500 दिनार उसको दिए, और कहा अच्छा एक काम और करो, मेरी ये क़बा ले जाओ। सही। अपनी क़बा देकर कहा कि इसको बेचकर और जो मज़दूर ले आओ जिससे ये दौलत तुम ले जाओगे अपने लिए, उस मज़दूर को इसको बेचकर मज़दूरी की उजरत दे देना। सही। यानी किस अंदाज से वो खल्क़ खुदा की मदद कर रहे हैं और सखावत उनकी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ये मशहूर वाक़यात हैं उनके इस तरह के। अच्छा, अब जब मामलात आगे बढ़ते हैं तो वक्त आता है, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे मसाइब फ़ेस किए हैं। सही। और बादे नबी बहुत सी चीज़ों से वो उन्होंने सामना करना पड़ा है उनको। तो अब जिस अंदाज से उन्होंने वो लेके चले हैं, बहुत उम्मत को एहतियात से बचा के कि कहीं तसादुम की सूरत ना हो, मजबूरन जहाँ तसादुम हुआ वहाँ फेस भी किया है। हत्ता कि ऐसा वक्त भी आ गया कि मौलाए कायनात के ऊपर सबो शितम किया जाने लगा। सही। और इवन के दिन में बच्चों को खिलौने देते थे और रात को उसको तोड़वा देते थे, कहते थे ये अली ने तोड़ दिए हैं। यानी बदनामी करने का सिलसिला किस तरह जारी था। हत्ता कि क़ज़्ज़ाक़ी करते थे और मशहूर करते थे कि ये अली ने लूट लिया है माल।
تو اس طرح کا ایک امیج پورا ڈیولپ کرتے جا رہے تھے. امام حسن علیہ السلام کا وقت آ جاتا ہے تو وہ امیج جو ڈیولپ ہوا تھا وہ اور بڑھانا شروع کر دیا. صحیح. یعنی ایون کہ بہت ساری تواریخ نے بھی اس طرح کی باتیں, جو کیونکہ تاریخ تو مکس لکھی ہوتی ہیں, وہ تو آج بھی اگر دیکھیں ہمارے سامنے ایک واقعہ روڈ پر بھی ہو جاتا ہے, ابھی ہمارے پاس وہ سوشل میڈیا بھی ہے, ہم اس واقعے کی کلپس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, 6 طرف سے کلپس آ جائیں نا, 6 سب میں الگ انداز میں دکھ رہا ہوتا ہے, بالکل جس اینگل سے جو اس کو بنا لے. تو اس لیے وہ تاریخ میں بھی ایسا ہوا کہ بہت سی باتیں, لیکن اس کے باوجود یہ معجزہ ہے, اتنے سب ظلم, بربریت, زیادتی اور نیگیٹو پروپیگنڈا ہونے کے باوجود فضائل محمد و آل محمد کو روک نہیں سکے لوگ. صحیح. کتنا بڑا معجزہ ہے. تو اب امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں حالات بہت زیادہ ابتر ہوتے چلے جا رہے تھے, حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ جہاں یہ پتہ چلا کہ اب امام کے اوپر, جیسے کہ کربلا میں واقعہ ہوا, اس صورت کا واقعہ ہونا تھا, لیکن امام نے امت کو بچانے کے لیے, کیونکہ وہ واقعہ اس نوعیت کا تھا کہ ایک طرف حجاز کے لوگ, ایک طرف شام کے لوگ, ایک طرف عراق کے لوگ, ایک طرف یمن کے لوگ, یعنی جو مولا علی کے چاہنے والے ہر طرف تھے, کہ وہ لوگ متاثر ہو جاتے اور ان کو مارا جاتا, شہید کر دیا جاتا اور زیادہ تکلیفیں پہنچائی جاتی. تو اس سب کو روکنے کے لیے حاکم میں وقت سے جو بات کی گئی تو اس نے کہا اوپنلی کہ ٹھیک ہے, ایک کوڑا کاغذ کی طرح انہوں نے دے دیا. ٹھیک. آپ نے وہ چیزیں لکھوائیں ساری, جب ترتیب سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایسی ہے کہ جو باندھ کے رکھ دیا حاکم کو, کہ ایک تو یہ کہ احکام خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہیں کرو گے. ٹھیک. اور اس ترتیب سے انہوں نے سارے سلو کے شرائط انہوں نے لکھوائے, حتیٰ کہ اس میں کہ علی اور اولاد علی پر سب و شتم بند کر دیا جائے گا. جہاں جہاں عراق, یمن, شام, حجاز وغیرہ میں جو مولا کائنات کے پیروکار ہیں, وہ خاص طور پر کیونکہ ظاہر دین اسلام, دین ایمان پر امام کو ماننے والے تھے وہ, تو وہ ان کو کوئی ایذا تکلیف مشکل نہیں ان کے لیے کی جائے گی. اور خود حاکم کوئی آگے کے لیے کسی کو نامزد نہیں کر سکے گا. اس طرح سے شرائط ہیں, وہ بہت ہی سخت شرائط کہلائیں گی سامنے والے کے لیے, اور ادھر سے دیکھا جائے تو بہت ہی معقول بات جو دین کی, ایمان کی ہے وہ رکھی ہے. تو اس طرح کی شرائط رکھ کے آپ نے باندھ دیا تاریخ میں ہمیشہ کے لیے, ایک چیز کو کھول کے رکھ دیا, ظاہر کر کے رکھ دیا, ایکسپوز کر کے رکھ دیا. تو لیکن اس کے باوجود ان شرائط پر عمل نہیں کیا گیا, ان شرائط کو پامال کر دیا گیا, اور سب کچھ اس کے خلاف ہی کیا گیا جو کچھ شرائط میں امام حسن نے. چلیں اس طرف ہم دوبارہ آتے ہیں پھر سے. سائیں تव्हां अचूं था त ॻाल्हि हुई जेको आहे सो तव्हां अॻ में हिकिड़ी ॻाल्हि थिए पई, उनखे ॿीहर जेको आहे सो पाण कंटिन्यू कयूं था, त आख़िर नबी साईं जो नस्ल जेको आहे धीउ खां ई छो हलायो वियो, हुनजे पोयां रब जी छा हिकमत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अम्मा बाद, धीउ खां रसूलुल्लाह जो, यानी रसूलुल्लाह काइनात में वाहिद हस्ती आहिनि जंहिंजो नस्ल धीउ खां हलियो. उहो इन जे करे यानी अरब कुझु बुराइनि में मशहूरु हुआ. उहा उन्हनि में मेन बुराई इहा त उहो न्याणीअ खे कुझु न सम्झंदा. सही. यानी नौज़ बिल्ला जानवर खां बदतर अगर न्याणी पैदा भी थी वञे तो वो पंहिंजे लाइ नंगो आर समझंदा हुआ. सही. यानी किसी के घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो वो अपने लिए नंगो आर समझता था. अहिड़े हिसाब सां अगर यानी कंहिंखे ख़बर बि ॾिनी वञे न, तो क़ुरान मजीद हिकु इस्तिलाह इस्तेमालु कई आहे, व तस्वदु वुजूहुन. सही. यानी अगर केरु कचहरी में वेठो हुजे ऐं उनखे ख़बर पए त मुंहिंजे घर धीअ ॼाई आहे, त उनजो मुंहुं कारो थी वेंदो. एतिरे ताईं नंगो आर परेशान महसूसु कंदा हुआ. पोइ वापसी अची या त मजबूरी सां कुझु न करे सघंदा हुआ, उन महिल कारवाई न थी, धीअ कहिड़े बि हिसाब सां साल 2 जी थी या 3-5 सालनि जी थी, जेसीं ताईं बालिग़ थियण न ॾींदा हुआ, उनखे जेको आहे जंहिं महिल मौक़ो मिलंदो हो उनखे ज़िंदा दरगूर करे छॾींदा हुआ.
अहिड़े ज़माने में अलाह ताला जे पंहिंजे रसूल खे मबूस कयो सही जंहिं ज़माने में धीअ खे रीच सम्झो वेंदो हुयो, नंगो आर सम्झो वेंदो हुयो, पोइ अलाह ताला इन्हनि जी हिदायत जे लाइ नमूने अमल ज़ात बणाई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। जनाबे सैयदा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जी औलाद ॾेई करे इन्ना आतैना कल कौसर जी ज़ात ॾेई करे, छो त जॾहिं हज़रत इब्राहिम ऐं हज़रत क़ासिम जी वफ़ात थी, उन खां पोइ काफ़ी मुनाफ़िक़ हुया जेके रसूलुल्लाह खे चवंदा हुआ नऊज़ बिल्ला अबतर। अबतर उनखे चइबो आहे जंहिंजे पोयां केरु न हुजे, जंहिंजो वली वारिस केरु न हुजे। पोइ चवंदा लोग ठठोलियूं कंदा हुया, चई नऊज़ बिल्ला हाणे हीअ अबतर आहे, हाणे हीअ गुज़ारे वेंदो, पोयों हिन जो दीन तबाह थी वेंदो हिन सां गॾोगॾु। पोइ अलाह ताला जी ज़ात इन्हनि टिनी चइनी मसइलनि खे हल करण जे लाइ नंबर 1 न्याणी जी इज़त, नंबर 2 न्याणी जी तौक़ीर सां गॾोगॾु न्याणी पीउ जी वारिस बि थींदी आहे, इहा इस्तदलाल। ऐं नंबर 3 न्याणीअ जे ज़रिए मां पंहिंजे हबीब जी नस्ल खे वधाए करे चवां त न्याणी बेकार न हूंदी आहे। ख़ुदावंद मुतआल इन्हनि ॻाल्हियुनि खे साबित करण जे लाइ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खे जेको आहे सो चए, जॾहिं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा इहो लफ़्ज़ ॿुधंदा हुआ त हादल अबतर, इशारो खणी बाक़ाइदा मुनाफ़िक़ इहो चवंदा हुया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो गुज़र जिथां थिए न, पोइ इशारो खणी चवंदा हादा अबतर, हादा अबतर। पोइ इन ॻाल्हि ते जॾहिं रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात महज़ून थी, पोइ उन ते वही नाज़िल थी अल्लाह जे रसूल ते त इन्ना आतैना कल कौसर, सूरह कौसर मशहूर मारूफ़, मुंहिंजा हबीब बेशक असां तोखे ॾेई छॾी आहे, यानी अल्लाह जो फ़ैसिलो अटल आहे, असां तोखे ॾेई छॾी आहे। इन्ना आतैना कल कौसर, हाणे कौसर कौसर जेको आहे सो फ़ौअल जे वज़न ते आहे, यानी ख़ैर कसीर ॾेई छॾियो आहे एतिरो। हाणे पोइ कंहिं जेको आहे सो नहर मुराद वरिती, कंहिंखे आसरो ॾियण जे लाइ नहरूं थोरी ॾिबियूं आहिनि, हाणे ईअं थोरी आहे कंहिंजो पुटु फ़ौत थी वञे, कंहिंजो बचिड़ो फ़ौत थी वञे त असां उनखे चऊं था असां तोखे फलाणी नहर ॾिनी आहे, ईअं न थींदो आहे। अलाह ताला जी ज़ात हिते आसरो ॾिनो, इन जो मतिलबु छा? इन जो मतिलबु तोखे अहिड़ी औलाद अता कंदुमि जेका पूरी काइनात में तुंहिंजे लाइ बाइस फ़ख्र थींदी, जे तूं मुंहिंजो नबी आहे, तूं ख़ातमुल नबीयीन आहे, तूं ख़ातमुल मुरसलीन आहे, तूं ख़ातमुल अइम्मा आहीं, यानी इमामुल अंबिया आहीं। अहिड़े हिसाब सां पोइ अलाह ताला जी ज़ात चयो इन्ना आतैना कल कौसर, ऐं फ़क़ति इहो वही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ते नाज़िल न थी, इहा वाहिद सूरत आहे जेका एट ए टाइम 2 जॻहुनि ते पई, क़ल्ब मुस्तफ़ा ते, उन खां पोइ काबतुल्लाह ते। ऐं छो त मके जे मुशरिकनि जो इहो उसूल हुयो, वॾा वॾा शाइर हुआ ऐं उते अदबी मुक़ाबिलो थींदो हो, पोइ काबे में पंहिंजा पंहिंजा शाइर लिखी ऐं शेर लिखी ऐं हलिया वेंदा हुया। पोइ पब्लिक फ़ैसिलो कंदी हुई त हे जेको आहे सो कंहिं शाइर जो शेर भलो आहे ऐं कहिड़ो वॾो वॾो शाइर आहे। हीअ वाहिद सूरत कौसर आहे, जॾहिं काबतुल्लाह ते लिखी वई, राति ते सभई सुता, सुबुह ते उथिया त सूरह कौसर लॻी पई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिक वनहर इन्न शानिअक हुवल अबतर। उन ते तमामु कुफ़ारनि जे अदीबनि इहो फ़ैसिलो ॾिनो त मा हाज़ा कलामुल बशर, हे त कंहिं बशर जो कलाम ई कोन्हे को, यानी एतिरे हिसाब सां। पोइ अलाह ताला जी ज़ात चए इन्ना आतैना कल कौसर, असां तोखे फ़ातिमा ॾिनी आहे, कौसर मूं मुराद जनाब सैयदा जी ज़ात आहे, इन जे ज़रिए तुंहिंजी शान बि इज़ाफ़ी आहे, इन जे ज़रिए जेको आहे सो तुंहिंजो दीन बि वधंदो, इन जी औलाद जे करे ई दीन खे जेको आहे सो ता अबद हयात मिलंदी क़यामत ताईं। ऐं ॾिठो वञे त वाक़ई ईअं ई थियो, जनाब सैयदा जी औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह करे, यानी वाज़े चिटा शराइत लिखी करे जेको आहे सो इन ॻाल्हि ते कंहिं माण्हूअ सही कई, जेको अमीर शाम हुयो, बहरहाल उन सही कई त मूंखे सभु शराइत क़बूल आहिनि। उन पहिरियों शर्त चई शरीयत ऐं दीन जे मुताबिक़ हलणो पवंदो, जेको बि हाकिम हूंदो मूंखे क़बूल आहे। इमाम अलैहिस्सलाम ॿी शर्त लिखी त कंहिं बि हाकिम खे इहो इख़्तियार न आहे त पंहिंजी मर्ज़ी रैयत ते हलाए, अहिड़े हिसाब सां। ऐं कंहिं बि हाकिम खे इहो इख़्तियार न आहे त पंहिंजो नाइब पंहिंजे मर्ज़ीअ सां हलाए,
ज़बरदस्त। बसि सुन्नत रसूलुल्लाह ते अमल कयो वेंदो ठीकु। ऐं उनखे नाइब चूंडण जो इख़्तियार न आहे। नाइब चूंडण जो इख़्तियार इमाम हसन अलैहिस्सलाम वटि हूंदो। बिल्कुलु। अहिड़ा अहिड़ा शराइत लिखी करे इस्लाम जो बोलबाला कयो, इस्लाम खे सर बुलंद कयो ऐं शहीद करबला। सही। इन ॻाल्हि खे हितां ई कंटिन्यू कंदासीं नाज़रीन, नंढी साई ते तालू पोइ वरी मोटी था अचूं। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी हिकु भेरो हाज़िर आहियूं ऐं ॻाल्हि ॿोल अची पहुती हुई मौला इमाम हुसैन ताईं, त ॻाल्हि खे उतां ई जेको आहे सो ॿीहर जोड़ींदासीं। साईं, ॻाल्हि अची पहुती मौला इमाम हसन ताईं, हाणे उनजो ज़िक्र निकितो आहे त उनजे हिल्म ऐं सक़ाफ़त जे हवाले सां कुझु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी जी। उन खां पोइ अल्लाह ताला जे सुहिणे रसूल इरशाद फरमायो त वहुमा रिहानताय। सही बुखारी में इहा ॻाल्हि आहे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे लाइ, त वहुमा रिहानताय। रिहानताय इन जो मतिलबु छा आहे? यानी इहे ॿई मुंहिंजा ख़ुशबू वारा गुल आहिनि। ख़ुशबू वारा गुल आहिनि। वाह वाह। रिहानताय यानी ॿई मुंहिंजा ख़ुशबू वारा गुल आहिनि। यानी इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन सां मूंखे रसूलुल्लाह जी ज़ात केॾो अज़ीम ऐं अहम पई सम्झे पंहिंजे लाइ। उन खां पोइ हिकिड़ो वाक़ियो आहे त हिकु शख़्स आयो इमाम हसन अलैहिस्सलाम वटि। उन शख़्स अची चयो त मौला मां बुखियो आहियां। ऐं इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो दस्तरखान मशहूरु मारूफ़ हुयो मदीने में। त उहो शख़्स आयो, उन शख़्स खे मौला चयो वे मानी खा दस्तरखान ते। हाणे हुन शख़्स खे हिकिड़ो कमु कंदे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ॾिठो त हू हिकिड़ो गिरह खाए पियो ऐं हिकिड़ो गिरह वरी लिकाए पियो, जीअं असां वटि अक्सर थींदो आहे। कुझु खाईंदा आहिनि, कुझु छापर में लोकाइण वारा जाम हूंदा आहिनि। पोइ जेको आहे सो इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुनखे ॾिसी करे चयो, चई मां तोखे झलियां कोन थो त न खण, पर मूंखे इहो ॿुधाए इहो खणे छो थो? चई फलाणे बाग़ में हिकु मज़दूर ॾिसी आयो आहियां। माना हिन मां मैसेज इहो मिले थो त अॼुकल्ह बि जेकॾहिं केरु माण्हू ईअं करे थो त उनखे करणु ॾिनो वञे, त शॉपर में जेकॾहिं विझे थो अक्सर असां उनखे जेको आहे सो हुनखे बेइज़्ज़त करणु राय ख़ुदा में था कयूं न। असां राय ख़ुदा में कयूं था, पोइ क़ैद छा जी आहे? जेसीं ताईं हले न्याज़, बिल्कुलु जेसीं ताईं हले बिस्मिल्लाह। बाबा हो खणी बि थो वञे, अगरि छापर में विझे पियो हो बि त कंहिंखे खाराईंदो न। बिल्कुलु। को त बुखो हूंदो न, ऐं को त अहिड़ो माण्हू हूंदो जंहिंखे दिलि सां रजी करे न खाधो हूंदो न। अहिड़े हिसाब सां अगरि तव्हांजो खाराइण जो ई मूड आहे त इमाम हसन अलैहिस्सलाम वारो तरीक़ो। इमाम अलैहिस्सलाम पुछो ॾे हवालो कंहिंजे लाइ थो खणे? चई इमाम अलैहिस्सलाम खे ख़बर हुई न। चई फलाणे बाग़ में हिकु शख़्स मज़दूर कमु थो करे पियो, उनखे मां ॾिसी आयो आहियां, उन खां मां घुरी मानी खाइण जे लाइ। उन वटां एतिरनि ॾींहंनि जी सुकल मानी पई आहे जो मां पंहिंजे हथ सां टोड़े बि न सघियुमि ऐं हू पाणीअ सां पुसायो आहे मानी पियो खाए। त इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुस्कराए ऐं चयो, चई तोखे ख़बर आहे इहो हुयो केरु जंहिंजो तोखे एतिरो ॾुख थो थिए? चई न मौला मूंखे ख़बर न आहे। चई इहो मुंहिंजो बाबो अली अलैहिस्सलाम आहे, हीउ उन जो ई दस्तरखान आहे। यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम जी ज़ात केतिरे क़द्र यानी जनाब रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तालीमात ते अमल कयो। ऐं इमाम हसन मुजतबा ख़ुदि रसूल मुअज़्ज़म जी तालीमात ते अमल कंदे केॾो बहितरीन दर्स ॾिनो। यानी केरु अगरि खणे थो त उनखे न रोकियो। तव्हां जॾहिं राहे ख़ुदा में करे चुका आहियो त हाणे तव्हांखे क़ैद लॻाइण जो को हक़ न आहे त फलाणो खाए फलाणो न खाए, या फलाणो खाए थो त खणे छो थो? अहिड़े हिसाब सां। ऐं उन खां पोइ ज़ैद बिन अरकम खां रिवायत आहे, सही बुखारी में ई ज़ैद बिन अरकम खां रिवायत आहे त अल इब्नाय अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। अहले जन्नत जे जवाननि जा सरदारनि, जेका साईं जन पेश कई रिवायत। त मसइलो इहो आहे त जन्नत में वञण खां पोइ केरु पोड़ो रहंदो ई कोन। इन जो मतिलबु इहो थोरे आहे त अगरि जवाननि जन्नत जा सरदार इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन सां आहिनि त जन्नत जे नेमतुनि ऐं ख़ासियतुनि मंझि हिकिड़ी इहा ख़ासियत अथव, चाहे जन्नत में ख़ातून वञे त उहा पोड़ी न हूंदी, उहा नौजवान हूंदी। चाहे जन्नत में मर्द वञे त उहो पोड़ो न रहंदो, उहो जवान थी वेंदो। अहिड़े हिसाब सां त जन्नत में हूंदा ई जवान। ऐं ज़ैद बिन अरकम फरमाइनि था त रसूलुल्लाह जन फरमायो सैयदा शबाब अहल जन्नत। इन जो मतिलबु इहो आहे त पोड़ा हूंदा ई कोन। ऐं उन खां पोइ अलाह ताला जे सुहिणे रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम खे चयो त मुंहिंजी सर खां वठी करे चेल ताईं शबाहत मुंहिंजो पुटु हसन आहे। ऐं
मुंहिंजे चेल खां वठी करे हेठि धड़ जी मुंहिंजी शबाहत मुंहिंजो पुटु हुसैन आहे। यानी अगरि इमाम हसन रसूल ख़ुदा जे चवण जो मतिलबु इहो आहे, अगरि सर जी इज़त कयो था त पेर खे कटणो न आहे। यानी अहिड़े हिसाब सां, छो त अगरि मथां इमाम हसन सां शबाहत आहे त हेठां इमाम हुसैन सां शबाहत आहे। यानी एतिरी अज़ीम शबाहत ॾेई करे ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो मुबाहिला में वञणु, नजरान जे ईसाइन जे मुबाहिले में वञी करे ऐं इनखे मज़हब अहल बैत खे हक़ साबित करणु, इस्लाम जी सरबुलंदीअ जे लाइ वञणु। क़ुरान इनखे चयो त फ़कुल त आलो न दो अबना अना व अबनाकुम, सूरह निसा में आयत मुबाहिला मशहूरु मारूफ़ आहे। इन्हनि खे चओ त असां पंहिंजा पुट सॼूं, तव्हां पंहिंजा पुट सॼो। जॾहिं हे ॻाल्हि नथा मञनि नजरान जा ईसाई, मुतफ़िक़ अलैह मुस्लमाननि जो इहो चवणु आहे त अलाह जो रसूल चइनि हस्तनि खे वठी वियो। छो त आयत जो अॻियों जुमिलो थो चए फनज अल्लाह न तलाह अल काज़बीन, पोइ कूड़नि ते असां लानत करार ॾींदासीं अलाह जी। कूड़नि ते लानत अलाह जो रसूल विझे, हिन जो मतिलबु छा आहे? यानी जंहिं ज़िंदगीअ में हिकु लफ़्ज़ बि कूड़ जो ॻाल्हायो हुजे, भले चाहे मज़ाक में चाहे सीरियस में, अगरि हिकु लफ़्ज़ बि ग़लति बयानी कई हुजे त उन ते फ़ौरन जो फ़ौरन उते जो उते अज़ाब अचणो हुयो। इन जे करे हे 4 हस्तियूं अहिड़ियूं हुयूं जंहिंजो अहिड़ो ताल्लुक़ हो अलाह जे रसूल सां, जंहिंजे लाइ मज़ाक में बि कूड़ जे झूठ जे शाइबो ई नथो ॾेई सघिजे। अहिड़े हिसाब सां यानी अलाह जे रसूल इहा शइ वाज़िह कई। इहे सभु शयूं कीअं थियूं? जे मां शुरूआती ॻाल्हि कई त अलाह जे रसूल पंहिंजे मर्ज़ीअ सां न, पर रब जे मर्ज़ीअ सां इहा ॻाल्हि कई। यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम खे वठी वञे, इमाम हुसैन खे वठी वञे शबाहत जे पाण सां, एसी ताईं जो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा जे लाइ अल फातिमतु बज़अतु मिन्नी, अहले सुन्नत जे सहाय सिता में इहा ॻाल्हि मौजूदु आहे त अहले सुन्नत इनखे तॾहिं त एक्सेप्ट कंदा आहिनि त फातिमा मुंहिंजे जिगर जो हिसो आहे। मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी, जंहिं फातिमा खे अज़ियत ॾिनी उन मूंखे अज़ियत ॾिनी। इन अल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा, अल्लाह फातिमा जे नाराज़गीअ सां नाराज़ थींदो आहे। यानी अल्लाह जी नाराज़गी चेक करणी आहे न त उनखे ॾिसो जंहिंसां फातिमा नाराज़ आहे। इहो कसवटी आहे, अल्लाह जो रसूल कसवटी ॾेई वियो। वयर्ज़ा लिरिज़ाहा, जंहिंसां बतूल राज़ी उन सां अल्लाह राज़ी। यानी अल्लाह जी रिज़ायत जी कसवटी ॾिसणी आहे न। उन खां पोइ अल्लाह जे रसूल फरमायो त मुंहिंजी धीअ फातिमा जो नालो इन जे करे फातिमा रखियो वियो आहे जो हीअ पंहिंजे मुहिबनि खे क़यामत जे ॾींहुं जहन्नुम खां अलॻि कंदी, जहन्नुम जे बाहि खां। ईअं जीअं कबूतर या परिंदो जेको आहे सो सुठनि दाणनि खे ख़राब दाणनि खां चूंडे अलॻि कंदो आहे न, मुंहिंजी धीअ फातिमा खे क़यामत जे ॾींहुं उहो अख़्तियार ॾींदी अलाह जी ज़ात। इहे सभु अलाह जे मर्ज़ीअ सां फरमायो काइनात जे रसूल ने। अगरि ॾिठो वञे त ख़ानदान रिसालत जीअं रसूल ख़ुदा अख़लाक़ जी आला मिसाल आहिनि, ईअं जनाब अमीर अल मोमिनीन जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन इमाम हुसैन उहे बेअनी ई अख़लाक़ जी आला मिसाल आहिनि। यानी ज़रे बराबरि बि शाइबो नथो अची सघे त को रसूल ख़ुदा खां अलॻि आहिनि। छो इन्हनि जो उथण बि ऐं हिकिड़ो वेहण बि हिकिड़ो। ॿियो हिकिड़ो वाक़िआ आहे इमाम हसन सामने। इमाम हसन सां मूंखां कंहिं शख़्स चयो मौला हे खजूरनि जो तश्त पियो अथव हे त मूंखे ॾियो। उहो शख़्स थो बयानु करे, या इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम जे लाइ अठों इमाम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम वाली मशहद जे लाइ बि इहा रिवायत आहे त हिकु शख़्स चयो मौला मूंखे खजूर त ॾियो। मौला मुठ भरे खजूर जी ॾिनी, खजूर थिया 18। त उन शख़्स चयो मौला कुझु त वधीक ॾियो। मौला जन फरमायो अगरि राति जो ख़्वाब में अलाह जे रसूल मुंहिंजे नाने मुहम्मद मुस्तफ़ा तोखे इन्हनि खां वधीक ॾिनियूं हुजनि त मां बि वधीक ॾींदुसि। यानी केॾो किरदार में मिसल आहे, केॾो किरदार मिले जुले थो। हिकु कदम बि सरकार जे मैयत खां अलॻि कोन्हे को। यानी अगरि ताल्लुक़ क़ाइमु करिणो आहे हज़रत रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां, उन जे लाइ ज़रूरी आहे त पहिरियों पंजतन पाक आइम्मा मासूमीन खे राज़ी करे माण्हू, उन खां पोइ अलाह जे रसूल खे राज़ी करे। अलाह जो रसूल अज़ ख़ुदि राज़ी थी वेंदो, छो त हिननि जो अमल रसूल ख़ुदा जो अमल आहे। यानी जहिड़े हिसाब सां रसूल ख़ुदा जन हज़रत अली अलैहिस्सलाम खे फरमायो त हिन मुनाफ़िक़ जी ज़बान कट। हिकिड़ो शख़्स आयो शाम खां आयो या किथां आयो, बहरहाल
अलाह जे रसूल खे ॻाल्हाइणु वेहिजी वियो, यानी बदशत ॻाल्हाइणु। अलाह जो रसूल चुप करे ख़ामोश करे ॿुधंदो रहियो, साहब बि सभु वेठा आहिनि। त आख़िर में अलाह जे रसूल हुन खां पुछियो, चई तुंहिंजी ॻाल्हि पूरी थी? चई हा मुंहिंजी ॻाल्हि पूरी थी। पोइ अलाह जे रसूल मौला काइनात ॾे मुंहुं करे चयो, चई या अली इक्ता लिसाना, इन जी ज़बान खे कट, इसकी ज़बान को काट दो। मौला काइनात उनखे वरितो, ॿाहिरि विया। हाणे साहबी सभु इहा ॻाल्हि ॾिसण जे लाइ त अलीअ जो बसि देरी कोन कंदो, ज़बान कटींदे देरी कोन थींदी। असां वटि ईअं कोन्हे हू त मौला काइनात हुनखे पैसा ॾिना, चई बुखियो आहियां, हे वठि पैसा मानी खा, हीउ लिबास अथई, तोखे सवारी ॾियां, सभु कुझु ॾियां। जॾहिं इहो करे मौला हुनखे रवानो कयो, सवारी बि ॾिनी, पैसा बि ॾिना, ऐं मानीअ जा पैसा अलॻि ॾिना, सफ़र जा पैसा अलॻि ॾिना, हुनजे घर जे हालात खे सही करण लाइ पैसा अलॻि ॾिना। हो सवारीअ ते घोड़े ते, भले घोड़े ते जॾहिं रवानो थियो, हेॾो सभु संगत अची पहुती अलाह जे रसूल वटि। या रसूल अल्लाह ज़ुल्म थी वियो, आपने तो कहा था अली को कि इसकी ज़बान काट दो, अली ने तो इसे मालो इकराम दे दिया। अली त हिनखे न ज़बान कटे न कुझु कयईं, उल्टो पैसा ॾेई रवानो करे छॾियईं। त रसूलुल्लाह जन उते मुस्कराए फरमायो त मुंहिंजी ज़बान खे जीअं अली सम्झे थो ईअं केरु ई नथो सम्झे। अलीअ जो किरदारु ऐं मुंहिंजो किरदारु हिकु जहिड़ो आहे। इहो मीज़ान अमल अलाह जे रसूल ॾिनो, यानी ज़बान कटण बि, कटण मां मुराद इहो हुयो, मुराद इहा हुई त हुनखे जॾहिं सभु कुझु हुनखे ज़रूरत जी शइ मिलंदी त उहो छो बदज़ुबानी कंदो। बिल्कुलु अहिड़े हिसाब सां लाज़मी हुनखे का ज़रूरत त हुई, ममलिकत इस्लाम जो रहण वारो हुयो त इस्लाम जे सरबराह ॾे ईंदो न, लाज़मी उहो शिकायत कंदो। अहिड़े हिसाब सां यानी किरदार अहल बैत ऐं अमल अहल बैत ऐं अख़लाक़ अहल बैत, एसी ताईं जो जिस्म जी चुरपुर, जिस्म जी बनावट, उमिरि जी बनावट बि रसूल ख़ुदा सां शबाह थी रखे पंजतन पाक में। यानी जनाब सैयद मौला काइनात जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन साहब, अहिड़े ई तरीक़े सां। अच्छा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम खे मदीने में माण्हू रसूल ख़ुदा जे मक़ाम ते ॾिसंदा हुआ। सही। जॾहिं मौला काइनात जी शहादत थी, उन खां पोइ मदीने जा माण्हू, मदीने जा सहाबी इमाम हसन अलैहिस्सलाम खे रसूलुल्लाह जे मक़ाम ते ॾिसंदा हुया। इन जे करे घणी इज़त इमाम हसन मुजतबा जी थींदी हुई। कुझु मुनाफ़िक़नि जे करे इहो कमु थियो। बहरहाल इमाम हसन साहब खे ज़हर मिलियो, त छो त अॼु मौला जी शहादत, राति मौला जी शहादत बि आहे, त मौला खे ज़हर ॾियण ते इक्तिफ़ा न कई वई। मुनाफ़िक़नि ज़हर त ॾिनो, ज़हर इटलीअ खां घुरायो वियो हुयो, उनजो नालो ज़हरे हिलाहल। हिलाहल अरबी ज़बान में उनखे चइबो आहे जेका शइ उॿारण वारी हुजे। सही सही आहे। यानी इमाम हसन साहब खे जेको ज़हर मिलियो, इमाम अलैहिस्सलाम जे जिगर जा टुकड़ा ॿाहिरि निकिता। ऐं ज़हर ॾियण वारो कातिल जोधा बिन अशस, अशस बिन कैस किंदीअ जी धीअ हुई, मौला जी घरवारी हुई। जेकॾहिं इहो ई मसइलो हुयो न, जेकॾहिं इमाम हसन साहब शादी न करे इमाम अलैहिस्सलाम खे ख़बर हुई, इमाम अलैहिस्सलाम रिश्तो मोटाए, त पोइ शिकायतूं ज़माने में जे काइनात जा जेको आहे सो रसूल जा वारिस था सॾाइनि, असां ग़रीब से रिश्तो खणी आयासीं त रिश्तो न ॿुधनि। जेकॾहिं रिश्तो कयो त वरी इहो वैल इमाम हसन मुजतबा के ज़हर ॾिनो। अच्छा सर, आपकी तरफ आते हैं हम, जो हज़रत इमाम हसन का जो किरदार हम बयान कर रहे हैं, जो उनके किरदार की बुलंदी है, तो आजकल के दुनियावी एतबार से हमें क्या उनसे सबक मिल रहा है, हमारे नौजवानों को क्या सीखना चाहिए? हाँ, बहुत सही बात है कि क्योंकि हमने रोल मॉडल करार दिया है और बिला वजह नहीं दिया है, बल्कि जान कर समझ कर उनको रोल मॉडल करार देते हैं हम। तो अब उनसे हम क्या असबाक़ व दुरूस हासिल करते हैं। तो ये पहली चीज़ तो ये है कि हमारे नौजवानों को, इवन सिर्फ नौजवानों को नहीं बल्कि बड़ों को भी, बच्चों को भी और ख़वातीन को भी, सब को ज़रूरत है मोहम्मद व आले मोहम्मद के लाइफ स्टाइल को, उनकी लाइफ को पढ़ें, सुने, समझें। और उसमें से देखें 100% तो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। सही। और हालात व मामलात व वाक़यात के लिहाज से जो भी सूरत हाल होती है उसको फेस करना होता है, तो उसके लिहाज से सही रहते हुए नंबर 1 तो चीज़ ये है कि अगर इज्तनाब कर लें एक बड़ी चीज़ से, यानी हराम से,
اپنے آپ کو بچا لیں اور فرائض و واجبات کو ادا کر دیں. ایٹ لیسٹ اتنا بھی کر لیں تو آج کے دور میں یہ بہت مکمل سمجھا جا سکتا ہے کہ 2 چیزیں کر لیں. ایک اس میں جو نہیں کرنے والی بات ہے, ایک جو کرنے والی چیز ہے. باقی دنیاوی معاملات ہیں, اس کے لیے دیکھیں کہیں بھی دین کے اندر پیسے کمانے کو منع نہیں کیا گیا ہے, کیونکہ پیسے کمائیں گے نہیں تو خرچ کہاں سے کریں گے اچھائی میں بھلائی میں. جب کمائیں گے تو بھلا کریں گے کسی کا. تو یہ چیزیں جو سیکھنے کی ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ خرچ کرتے تھے, اور خرچ اتنی زیادہ کرتے تھے اس سے زیادہ پھر ان کے پاس آتی تھی. ابھی سائی نے واقعہ بتایا ہے 2-3, جیسے ابھی مولا کائنات کا بتایا کہ یہ حضور سرور کائنات کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ مولا کائنات یا اہل بیت اطہار ائمہ معصومین وہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. کیوں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی کہ مجاز کے طور پہ کہا جا رہا ہوتا ہے, ایک بات کہی جا رہی ہے, اس کا مقصد مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھنے کے لیے ہمیں معصومین علیہ السلام کی ہی ضرورت ہے. ان سے ہی مطالب و معنی اور تفسیر لیتے ہیں. ابھی وہ جیسے سائی نے بیان کیا, وہ شخص کو سواری دے کر اور کھانا پینا دے کر روانہ کر دیا کہ اس کی زبان کو قطع کر دو. اب زبان قطع کرنے سے مراد یہ تھی کہ یہ جملے جو یہ میرے خلاف آ کے یہاں اول فول بک رہا ہے یہ ختم ہو جائے. اور وہ ختم بھی ہوا. وہ شخص دوبارہ آیا اور وہ شاعر تھا, اس نے پہلے وہ ہجو بیان کر رہا تھا حضور سرور کائنات کی معاذ اللہ, اس کے بعد وہ آیا, اس نے آ کے نعت رسول مقبول سنانی شروع کر دی. تو قطع کر زبان ہو گئی اور چینج ہو گیا اور یہ ہو گیا. تو یہ مولا کائنات نے جو اس سے نتیجہ نکالا تھا کہ کس طرح زبان اس کی یہ والی ختم ہوگی تو دوسری زبان جو صحیح والی ہے وہ اس کے اندر آئے گی. تو اس طرح یہ ہوا. تو اس طرح ہمیں بہت ساری مثالیں یہ ہیں کہ ان چیزوں سے پھر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے واقعات ہیں. مثال کے طور پر ابو جادہ بنت اشعث نے زہر دے دیا ہے, اور زہر بھی بتا دیا اختائی نے اچھی طرح. تو وہ جگر کو کاٹ دینے والا زہر اور منہ سے خون جاری ہونا یہ چھوٹی بات نہیں تھی, کیونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ حاکم نے طے کر لیا تھا کہ ان کو ختم کر دینا ہے, مار دینا ہے, قتل کر دینا ہے. تو ایسے میں صرف ان کو نہیں کر دینا ہے, اطراف کے تمام حجاز سے لے کے اور دور دراز کے علاقوں تک تمام وہ جو اہل اسلام میں راہ راست پر نظر آ رہے ہیں. جو اب ہوا کیا, 2 کیمپ بنا لیے تھے انہوں نے. ایک کیمپ ہمارا ہے, ایک آپ کا ہے. اب صحیح غلط کا تعین تو پبلک کر رہی تھی, لیکن 100% پبلک کر نہیں سکتی ہے, کیونکہ جو ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ اتنا زیادہ تھا شام کی طرف سے کہ اس کے آگے دیکھیں آپ ہم اگر کوئی غلط بات پھیلانا چاہیں تو بہت جلدی پھیلتی ہے. بالکل صحیح بات بتانے لگے تو لوگ کیا کیوں کیسے اس کے اندر سالوں لگتے ہیں, وہ ٹائم بھی لگتا ہے, آسان نہیں ہوتا. تو اس وقت جو مسلمانوں کو بچانے کے لیے امام نے ایک اسٹیپ لیا, تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے. آج کے دور میں بھی اگر ہم چاہیں اہل اسلام کو بچائیں, جو آپ کا سوال تھا کہ کس طرح ہمیں حکمت عملی رکھنی ہے کہ ہمیں اتحاد و اتفاق و یگانگت, بھائی چارگی, اخوت, رواداری سے لے کے چلنا ہے سب کو. لوگ خود سمجھیں گے. وہی واقعہ مولا علی کا جو سائی نے سنایا کہ جب ہم صحیح طریقے سے چلیں گے تو سامنے والے کو بدل کے رکھ دیں گے. آپ سلام سنا دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا. بس چند اشعار ہیں یہ, کیونکہ آج کے دور میں جو ضرورت ہے ہمیں وہ انہی کی طرح کی کرنے کی ضرورت ہے. تو کہتی ہے زمین آج یہ اس پاک وطن کی, کہتی ہے زمین آج یہ اس پاک وطن کی, اس دور میں اب ہم کو ضرورت ہے حسن کی. اس دور میں اب ہم کو ضرورت ہے حسن کی. اور کرتاس پہ رکھا ہے قلم تیغ کی مانند, کرتاس پہ رکھا ہے قلم تیغ کی مانند. تحریر بتاتی ہے کہ ہے مولا شاہ زمن کی, تحریر بتاتی ہے کہ ہے شاہ زمن کی. اور ہے زیر اثر مولا حسن کے یا نہیں ہے, ہے زیر اثر مولا حسن کے یا نہیں ہے. ہر پتی بتاتی ہے ہمیں بات چمن کی,
ہر پتی بتاتی ہے ہمیں ہمیں بات بات چمن کی، اور جب خاک کف پائے حسن ابن علی ہو، صحیح، جب خاک کف پائے حسن ابن علی ہو، پھر مجھ کو کوئی فکر نہیں زیر کفن کی، واہ 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 واہ، پھر مجھ کو سبحان کوئی اللہ، فکر نہیں زیر زیر کفن کی۔ اور اس دور کے مکاروں کو کرنا ہے اگر زیر، اس دور کے مکاروں کو کرنا ہے اگر زیر، تحریر کو ہی رکھ دو فقط مولا حسن کی، واہ واہ، تحریر کو ہی رکھ دو فقط مولا حسن کی۔ اور آخری شعر ہے، کٹتا ہے جگر زہر سے خون آتا ہے منہ سے، کٹتا ہے جگر زہر سے خون آتا ہے منہ سے، ظالم نے دیا زہر یہ حالت ہے حسن کی، ظالم نے دیا زہر یہ حالت ہے حسن کی۔ اور جب عین رضا شیر کہے مدح حسن میں، جب عین رضا شیر کہے مدح حسن میں، تعریف نہ کیوں ہوگی سخنور سے سخن کی، واہ واہ، تعریف نہ کیوں ہوگی سخنور سے سخن کی، کہ کہتی ہے زمین آج یہ اس پاک وطن کی، اس دور میں اب ہم کو ضرورت ہے حسن کی۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب، عمدہ۔ اچھا سائیں تہاں ॾे अचूं था त हाणे हूअं बि प्रोग्राम जेको आहे सो पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची रहियो आहे। आख़िरी कोई जेको आहे सो असांजी उम्मत जे लाइ को सुठो पैगाम त असां आख़िर एतिरी रहनुमाई, एतिरो कुझु असां वटि जेको मवाद आहे, हिकिड़ा किरदार आहिनि, उन जे हूंदे बि असां छो एॾी मुश्किलनि में आहियूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन जे करे अल्लाह ताला इंसान खे अशरफुल मखलूक़ात बणायो आहे। पोइ अल्लाह ताला उनखे ईअं अशरफुल मखलूक़ात न बणायो आहे, उन जे लाइ इम्तिहान आहिनि, मुसीबत जो इम्तिहान, हसद जो इम्तिहान, अहिड़े हिसाब सां काफ़ी सारनि बुराइनि जे ज़रिए इम्तिहान। लेकिन इंसान खे हिकिड़ो कमु करणु खपे, वधीक कंहिं कम जी ज़रूरत ई कोन्हे का। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं उन जे अहल बैत जी ज़िंदगीअ खे पढ़े ऐं उन जे मुताबिक़ अमल करे न सघंदो, रुगो कोशिशि कंदो, जन्नत जा दरवाज़ा पाण ई खुलिया पिया आहिनि। यानी पूरे पाकिस्तान में अॼुकल्ह न कंहिं सां हसद थींदो, न कंहिं सां जेको आहे सो दुश्मनी थींदी, फ़क़ति हिकिड़ी ॻाल्हि, क़ब्र हशर खे यादि करे सुन्नत रसूल मुअज़्ज़म ऐं सुन्नत अली इब्न अबी तालिब, सुन्नत बीबी फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, सुन्नत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ऐं सुन्नत इमाम हुसैन ते अमल करे इंसान अमल करण जी कोशिशि कंदो, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में पाण ई आला खां आला तरीन थी वेंदो। यानी अहिड़े हिसाब सां जीअं मां तव्हांखे सवली सिंधी में ॿुधायां, अॼुकल्ह जाम जेको आहे सो इवेंट वग़ैरह थियनि था, मैरिज इवेंट वग़ैरह हिते बि थियनि था, ॻोठनि में बि थियनि था, हर जाइ ते असां मैरिज इवेंट कंदा आहियूं। लेकिन असां इहो त ॾिसंदा आहियूं जिथे अमीर माण्हू अची सघनि था उते 50 ग़रीबनि खे बि खाधो खाराए सघूं था। ठीकु आहे, अहिड़े हिसाब सां यानी अल्लाह जे रसूल जो जेको मैरिज इवेंट हुयो, रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शादीअ में काज जो ख़र्च हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन कयो। त चवण जो मक़सदु इहो आहे, हज़रत अबू तालिब ग़रीबनि खे अलॻि करे पट ते न विहारियो, अमीरनि खे सॾे करे बेड ते न विहारियो। जने ही तसलसल उतां थो अचे, ख़ुलुक़ रसूल मुअज़्ज़म जो, ख़ुलुक़ अंबिया जो तसलसल इतां थो अचे। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम सभिनी खे बराबरि खाधो बि, सभिनी खे बराबरि, केरु घर लाइ खणे थो या न खणे थो, असां त पंहिंजे बचनि जी शादी जो इवेंट कयो आहे। अहिड़े हिसाब सां ऐं इन्हनि थोरनि शयुनि ते नज़र करण सां असांजी ज़िंदगीअ में कुझु तब्दीलियूं ईंदियूं आहिनि। छो त जेका शइ तव्हां भली कंदो उन जा साइड इफेक्ट तव्हांजे जिस्म ते अचणु शुरू थींदा। जज़ाकल्लाह साईं, तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी सर, आपकी बहुत बहुत महिरबानी जी। नाज़रीन, प्रोग्राम जेको आहे सो पंहिंजी पुॼाणी ते पइजी चुको आहे। हज़रत इमाम हसन ते ॻाल्हायोसीं, सखावत ते उन्हनि जी जेको आहे सो
ऐं असांखे बि ईअं ई सख़ी थियणु घुरिजे। सख़ी रुगो मानी खाराइण वारो या माल ख़र्च करण वारो न हूंदो आहे, सख़ी माफ़ करण वारो बि हूंदो आहे। इजाज़त ॾियो, वरी गॾु थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।